हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ फाइनल टर्म पेपर्स जनवरी 2023 जो कि लेटेस्ट है। थर्ड सेमेस्टर के तमाम सब्जेक्ट्स के पेपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला पेपर है जी ह्यूमन राइट्स एंड सिटीजनशिप का, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है women rights have come a long way, as now famous saying goes, women's rights are human rights. Discuss with reference to women's position in Islam and South Asian society. And question number 2 is the UN Secretary General famously said that let us ensure that people who most need their rights protected are made aware that the universal UDHR, जो कि Universal Declaration of Human Rights, exists and that it exists for them. To what extent do you think this statement lives up to the expectation of underprivileged and marginalized people in our world? Discuss with relevant evidence. And question number 3 है जी, right to fair trial is essential in maintaining peace and harmony in any society. Discuss with reference to Article 6 of UDHR. एंड दूसरा सब्जेक्ट हमारे पास है जी इस्लामिक स्टडीज़ का। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रीफली डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स। पहला आ जाता है जी द इम्पोर्टेंस ऑफ मिसाक़ मदीना यानी पैक्ट ऑफ मदीना, और इफेक्ट पार्ट बी है जी इफेक्ट्स ऑफ ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। एंड क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम? डिस्कस सम बेसिक ह्यूमन राइट्स in the light of Sirah, obviously Sirah of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Question number 3, write a short note on the followings: manners of cleanliness, manners of greeting, manners of talking. And short fiction का पेपर है जी। क्वेश्चन नंबर 1, critically evaluate Olenka for codependency and disempowerment of women in Anton Chekhov's The Darling. Discuss Joseph Conrad's use of doppelganger theme. Let me zoom it out. Yes, doppelganger here theme, and it implies double of the oneself, not only to discover oneself but also to bring about maturity and development in the protagonist in the sacred sharer. So sacred sharer के अंदर ये जो थीम है, जब वो भाग के आता है ना शिप के अंदर, उसको जो है सेव कर लेता है, तो ही फाउंड दस वो उसको खुद जैसा समझता है, यानी अंडरस्टैंडिंग या उसकी पर्सनालिटी। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है जी, राइट नोट्स ऑन एनी ऑफ टू ऑफ द फॉलोइंग। पहला है जी मैजिक रियलिज्म इन अ वेरी ओल्ड मैन विद इनॉर्मस विंग्स, और दूसरा है जी द अदर साइड ऑफ द हेज, अ सिंबॉलिक टेल ऑफ कन्फ्लिक्ट, फेलियर्स एंड एक्सेप्टेंस, एंड द थीम्स ऑफ हंगर आर्टिस्ट और क्लासिकल पोइट्री। Question number 1, critically analyze the given poetic excerpt by providing reference to the context and apply shift method यानी symbols, imagery, figurative language, tone and theme in your analysis. So lines दिए गए हैं: farewell, happy fields, where joy forever dwell, hell, horrors, hell. सो ये लाइन्स आप आइडेंटिफाई करके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिख ले। पार्ट बी है जी, बाय कीपिंग इन माइंड द एसेंस ऑफ benchmark motifs, poetic styles, themes of classical poets, compose one para on the topic. We quarrel with others to make rhetoric, we quarrel with ourselves to make poetry. By taking into account any classical poet of your choice. Question number 2 is, Paradise Lost is unique emblem of the description of the hell, heaven, moral values, description of Satan. It has an aesthetic and critical appeal for the literary academia at a large.
elucidate the unique method of representation by focusing on the diction, figurative language, unique comparison, which Milton has incorporated in a convincing, critical manner to highlight this subject matter. And then question number 3, discuss the rape of the log as a mock epic poem. In classical poetry, same wahi paper. Then phonetics and phonology. Question number 1. Describe the functions of following in articulation of human speech. पहला है vocal cords का और soft plates का उनका function यानी these are organs of speech. Question number 2. How can you differentiate between assimilation and elision? Discuss all possibilities with examples के through possibility. And then question number 3, part A, give the phonetic transcription if the following words of the following words. यहाँ पे कोई mistake होगा, typo, so इनका phonetic transcription आपने लिखना है. And part B is write these transcribed words into English. इसकी transcription दी गई है, आपने simple English words लिखने हैं. क्लासिकल पोइट्री वही पेपर. सो दिस इज़ ऑल अबाउट थर्ड सेमेस्टर के पेपर्स फाइनल टर्म, और मॉर्निंग के अगर मुझे मिल जाते हैं आई विल प्रोवाइड यू. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.